न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ। और गायक गुनगुनाएगा आग और अजनबियों के बारे में, और शाम बस किसी और शाम की तरह होगी और गायक गुनगुनाएगा। युद्ध विराम की शांति नहीं, ना ही भेड़िए और मेमने के बीच ठहरा समय। जंगली फूल की तरह अचानक, क्योंकि जमीन को चाहिए बेलौस अमन, बस अमन। जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ। बहरहाल ये नज्म महमूद दरवेश साहब की है और अपूर्व आनंद जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। मैं महमूद दरवेश की, जो फिलिस्तीनी शायर हैं, आपके सामने पढ़ रहा हूं। उदास शाम एक उजड़े हुए गांव में, आंखें नींद भरी, मैं याद करता हूं 30 साल और 5 युद्ध। मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल रखेगा महफूज मेरी मक्का की बालियों को, और गायक गुनगुनाएगा आग और अजनबियों के बारे में, और शाम बस किसी और शाम की तरह होगी और गायक गुनगुनाएगा। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्यों गाते हो? और उसने जवाब दिया, मैं गाता हूं क्योंकि बस मैं गाता हूं। और उन्होंने उसका सीना टटोला, लेकिन उसमें सिर्फ एक दिल था। उन्होंने उसका दिल टटोला, लेकिन उसमें सिर्फ उसके देश के लोग थे। और उन्होंने उसके सुर टटोले, लेकिन वहां सिर्फ एक वेदना थी। और उन्होंने उसकी वेदना टटोली, लेकिन वहां सिर्फ जेल था, सिर्फ जेल। और उन्होंने उसका जेल टटोला, लेकिन वहां उन्होंने खुद को पाया जंजीरों में बंधा हुआ। दोस्तों, तौफीक ज़ियाद की एक रीसेंट पोएम है, कहीं आसान है। कहीं आसान है हाथी का एक सुई के नाके से गुजर जाना, कहीं आसान है उन कहकशाओं में किसी मछली को तलाश कर लेना, कहीं आसान है सूरज को बुझा देना, हवाओं को कैद कर लेना, या मगरमच्छ को ज़बान खल्क सिखला देना। बहुत मुश्किल है लेकिन हमारे अज़्म की झिलमिलाती लौ की ताबानी को बुझा देना, हमारी मंजिल की जानिब बढ़ते हुए कदम को रोक देना। कदम, बस एक कदम। युद्ध विराम की शांति नहीं, ना ही भेड़िए और मेमने के बीच ठहरा समय। युद्ध विराम की शांति नहीं, ना ही भेड़िए और मेमने के बीच ठहरा समय, ना कि जब उत्तेजित दिल बैठ से जाएं और आप बात करें अपने पस्त होने की। मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कत्ल करना, मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कत्ल करना, मेरी ये सिफत ही मुझे व्यस्क बनाती है। मेरा बच्चा खेलता है खिलौने की पिस्तौल से, जो सिर्फ जानता है आंखें खोलकर पुकारना, मां। शांति क्या है? हल के फल से टकराती तलवारें, निशब्द एक भारी रबड़ स्टैम्प की धड़ की आवाज। उसे हल्का ही रहने दो, तैरते हुए से आलसी सफेद झाग की तरह, जख्म पर फाये की तरह जो मरहम की बात करता है। यतीम बच्चों की आहें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती हैं, एक रिले की तरह जिसका बेटन कभी नहीं गिरता। उसे उगने दो एक जंगली फूल की तरह अचानक, उसे उगने दो एक जंगली फूल की तरह अचानक, क्योंकि जमीन को चाहिए बेलौस अमन, बस अमन। You can only see the sky, so it's an open jail, but it's like a jail. And Palestine was never a state. The people were just living there on sufferance. When the Second World War ended, and the Jews who were in the concentration camp, who had survived the concentration camp, were rescued by the Allied forces, then suddenly they went backwards and started feeling remorse and guilt over what had happened to the Jews, and they wanted to find them a homeland. Now, if they wanted to find them a homeland, why didn't Europe or the United States find place for them
in their territory. Why did they have to take them to Palestine and bifurcate Palestine and hand over one portion of it to the Jews to form their own state, Israel? Whereas Palestine was never a state. It remained under UN administration, though it was given 48% of the area and 44% to Israel, and the rest, Jerusalem was to be under UN administration. But even Palestine remained under UN administration, part of it managed by Jordan and part of it managed by Egypt. What Palestine wanted was a state, to be a state. It wanted dignity. It wanted to be treated as citizens, which never happened. And right at the moment when Israel was formed, first of all, Palestine was not one piece of land. It was divided into 3 pieces. And it was clear that Israel is not going to let Palestine, it might be following a particular religion, but this was made for Jews, and Jews from all over the world travel to this place. So now you have created a situation, the situation was created by so-called UN, which is really dictated to by America. So US and UK and Europe created a situation where Palestine was doomed. The people of Palestine was doomed to be colonized by Israel. And with what cruelty it is done was to be decided by Israel. Now recently, of course, because Hamas, a terrorist organization, took it into its head to go and attack Israel and commit brutal acts there, Israel has got an excuse. And the entire world, the governments of the entire world are with Israel. The people of the entire world are with Palestine. Because the people can see how Palestinians are suffering. But the governments have to trade with Israel. Israel has everything. It has technology, it has army, it has weaponry, it can trade with you, and it can supply you with all kinds of weaponry and surveillance equipment, which we all buy from them. Our own government is supporting Israel to the extent that it abstained from the vote in the UN for treating Palestine with on humanitarian grounds. So what happens now? What happens now is that pressure has to be put on Israel to withdraw from Gaza. And then Gaza has to be given all rights of a state. I don't see it happening. I don't see it happening ever. So, who is interested in Palestine, excepting people like us? People everywhere, in every country, people are raising their voices and saying that we must give humanitarian aid to Palestine, we must give facilities. They don't even have water, they don't have food, they don't have medical supplies. The children are being killed. Large number of children. If out of the 7,000 killed, half of them are children and women, and small children. So you are actually committing genocide, you are finishing the race off. You are killing the people now and you are killing the future generations. So, I don't know, Achin said there is hope. Now, what hope is there? I cannot see. And Israel has declared with great arrogance that while reporting on Hamas, that Palestinians, they are not human beings. They are not human beings. They are like animals and they should be exterminated. They have no right to live on this earth. They should be exterminated. So here they want to do the same thing. They want to do another Holocaust in which people who are not Jews would be exterminated the way the Jews were exterminated by the Christians. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।